लास्ट टाइम आपने पढ़ा है जो ट्रांजिस्टर है वो 3 टर्मिनल डिवाइस है, उसमें एमिटर बेस और कलेक्टर है। एमिटर जो है वो आपके पास उसका सेक्शन जो है वो ग्रेटर विड्थ का होता है, कलेक्टर सबसे बड़ा होता है, और जो है बेस वो सबसे स्मॉलर होती है, इन साइज होती है। और जो एमिटर है वो हैवीली डोप्ड होता है, बेस लाइटली डोप्ड होती है, और जो कलेक्टर है दैट इज इंटरमीडिएट डोपिंग होती है। हमें ट्रांजिस्टर ऑपरेशंस पढ़ने हैं कि अगर हम ट्रांजिस्टर को बायस करते हैं तो किस किस्म के फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेगा। तो उसके बेसिकली आपके पास दो जंक्शन फॉर्मेशन होती हैं, एक एमिटर बेस और सेकंड वन इज द कलेक्टर बेस। अब यहाँ पे जो आपके पास जो नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग जो एमिटर बेस जंक्शन है वो ऑलवेज फॉरवर्ड वाइज होगा, कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो ऑलवेज रिवर्स वाइज होगा। ठीक है, ये सिमिलर कंडीशन होंगी तो आपके पास जो है दैट इज अ नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन। इस केस में जो है वो जो ट्रांजिस्टर है वो वर्क करेगा, वर्किंग ऑपरेशन भी होगा। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एमिटर फॉर एग्जाम्पल के यहाँ पे ये होगा पॉजिटिव, और यहाँ पे कलेक्टर जंक्शन जो है वो ये पीएनपी या फिर एनपीएन कोई भी फॉर्मेशन हो सकती है। अमूमन डेली लाइफ में जो इतने भी ट्रांजिस्टर यूज होते हैं और ज़्यादातर मोस्टली जो है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज होते हैं, कहीं ना कहीं जो है वो आपके पास पीएनपी ट्रांजिस्टर जो है वो भी यूज होते हैं। अब आपने एक एग्जाम्पल यूज़ करनी है, आपने एक पीएनपी ट्रांजिस्टर यूज़ करना है और उसे बाइसिंग जो है वो प्रोवाइड करनी है। एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ठीक है, पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर आपने ये वीईई जो है ये वोल्टेज प्रोवाइड किया है। ये आपने किसको किया है, यहाँ पे आपने एमिटर बेस को दिया है। आपके पास एमिटर है और कलेक्टर भी आपके पास पी टाइप है, एंड टाइप आपके पास जो है वो बेस है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो वीई है, इसको पॉजिटिव को पॉजिटिव से किया है, इस नेगेटिव को नेगेटिव से किया है, इसका मतलब है कि आपने फॉरवर्ड बाइस कर दिया है। अब कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बाइस करना है तो आपने ये बैटरी के पॉजिटिव को एन टाइप से और नेगेटिव को पी टाइप से मीन्स अपोजिट पोलैरिटी से जो है वो अटैच कर दिया। जो करंट पास आउट कर रहा है एमिटर में से दैट इज आई ई, जो बेस में से कर रहा है दैट इज आई बी, और जो कलेक्टर में से कर रहा है दैट इज आई सी। अब बाइसिंग पोटेंशियल जो है वो वी एंड वी सी से आर अप्लाइड टू द पीएमपी ट्रांजिस्टर्स। बेस इज वेरी थिन एंड दैट इज एंड material and have a low conductivity and current pass through base is IV, emitter is heavily doped and current that is passing is IE and due to collector current is IC. Emitter base junction is always forward bias and collector base junction is reverse bias. अभी जो ऊपर डायग्राम है इसके ऊपर आप करंट रूल अप्लाई करते हैं, इसके अकॉर्डिंग है। देखिए इनकमिंग करंट जो है यहाँ पे आई ई है, आउटगोइंग आई बी और आई सी आ रहा है। तो आपके पास जो मेन रूल आता है करंट रूल, उसके अकॉर्डिंग क्या रूल आता है दैट इज अ टोटल इनकमिंग करंट। पेपर में भी आप लोग था जो है वो रूल आया हुआ, तो करंट लॉ था और वोल्टेज ड्रॉप दोनों आए थे। इनका मेन सारी जगहों पे इनका काम है। उसके अकॉर्डिंग आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। इसका मतलब है जो आपके पास एमिटर करंट है वो बहुत ज़्यादा होगी, बिकॉज वो बेस करंट और कलेक्टर करंट दोनों का जो है वो सम अप आ रही है। ठीक है, इट गिव्स फाइंड द एमिटर करंट इज सम ऑफ द कलेक्टर करंट एंड द बेस करंट। द मैग्नीट्यूड ऑफ द बेस करंट इज टिपिकली ऑफ द ऑर्डर ऑफ microamperes as compared to the milliamperes for emitter and collector current। ये जब बेस करंट आपके पास है वो तो मुझे माइक्रो एम्पेयर्स मिलती है, दैट डिपेंड्स ऑन माइनस। और जो इमिटर और कलेक्टर करंट्स हैं वो मिली एम्पेयर्स मिलते हैं, 10⁻³ में। ये तो मतलब जो बेस करंट है वो बहुत छोटी है और जो इमिटर और कलेक्टर करंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। आगे है आपके पास ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। ट्रांजिस्टर जो है वो 3 टर्मिनल्स हैं उसके, लेकिन आपने अभी पीछे जब आपने डायोड्स पढ़ा उसमें आपके पास 2 टर्मिनल थे, एक से इनपुट लेते थे, एक से आउटपुट ले लेते थे। बेसिकली जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो यही होती है कि जो आपके पास ट्रांजिस्टर है या तो 2 टर्मिनल्स होने चाहिए या 4 होते हैं, 2 केस में तो 2 होते, एक से इनपुट दें एक से आउटपुट लें।
और जब 4 हो तो 2 से इनपुट दें और 2 से आउटपुट ले लें, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होगा, 3 इसके टर्मिनल है, तो हम क्या करते हैं, इनमें से जो एक टर्मिनल है उसे कॉमन कंसीडर करके इसे ग्राउंडेड कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सो फॉर दिस पर्पस वी टेक वन टर्मिनल कॉमन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, द कॉमन टर्मिनल इज ग्राउंडेड। ये टाइप की है ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशन। एक है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर। कॉमन इमीटर के अंदर आप एमीटर को ग्राउंडेड कर देते हैं, कॉमन बेस के अंदर बेस टर्मिनल को ग्राउंडेड कर देंगे, कॉमन कलेक्टर के अंदर कलेक्टर टर्मिनल को ग्राउंडेड करेंगे। ये सिम्बॉलिकली शो किया हुआ है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर एमीटर को ग्राउंड कर दिया है, यहाँ पे ये बेस को ग्राउंड कर दिया है, और यहाँ पे जो है वो कलेक्टर को कर दिया। ये एग्जाम्पल पीएनपी ट्रांजिस्टर्स की यूज़ की है। प्रेजेंटेशन आज किस किस की है, एक अहमद की है और किसकी है प्रेजेंटेशन, अनीक की, इमाम की, अहमद की है और And my topic of presentation is famous scientists and their contribution. The first scientist is Albert Einstein, born on 1879 and he died in 1955. He was a German scientist. He developed a general theory of relativity, one of two pillars of modern physics. What is general theory of relativity? Theory of relativity into have two divisions: special relativity and general relativity. Special relativity applies to all physical phenomena in the absence of gravity, and general relativity explains the law of gravitation and its relation to other forces of nature. And his work is also known as his work is also known for influence on the physiology of science. He is best known to the general purpose for his mass energy equivalence formula is equal to mc square, which has been dubbed the world's most famous equation. Okay, an equation delivered by 20th century physicist Albert Einstein, in which E represent unit of energy and m represent the mass of unit, and c square is the speed of light squared or multiple by itself. The next scientist is Isaac Newton. He born on 1642 and died in 1726. He was an English physics and mathematician. He gave law of motion and universal gravitation. What is law of motion? Three law of motion. First is every object in the state of uniform motion will remain in a state of motion unless an external force act on it. The second law is force equals mass time acceleration. The third is for every action there is an equal and opposite reaction. The next is Newton's law of universal gravitation is usually stated as every particle attract every other particle in the universe with a force that is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distance between them. You know the formula F is equal to G m1 and m2 over r square. So Stephen Newton have also contribution in light for observe, observation, different color from telescope like this.
You can see in my slide. The third is Stephen Hawking. Stephen Hawking is a theoretical scientist, have a great search on stars, masses, and radiation like. So his scientific work include a collaboration with Roger Penrose on gravitational singularity. So he gave a concept of Hawking radiation. What is Hawking radiation? Hawking radiation is the black body radiation that is predicted to release by black hole due to quantum effects near the black hole, like whatever he gave the idea, how black hole produce, how stars died and new stars came into found. He Stephen Hawking gave this idea in 1974. The third is Archimedes. Archimedes have great contribution in mechanics, like how to lift objects by pulley, and invented most fundamental concept of gravity, the center of gravity. Like when many objects move, an object moves, so the whole weight of body lie on one point. Uh, I think you have read this topic in ninth class. So from in ninth class, so the next the next is Archimedes gave the correct value of pi. Next is Nikola Tesla. Nikola Tesla was born in 1857 and died in 1943. He was a American physics inventor, electrical engineer, mechanical engineer, and he have great contribution in AC electricity. AC electricity supply system. He invented basically this system in America. So he was having a great tussle with Thomas Edison. So Thomas Edison work on DC current. So, but he consisted to provide AC current to the consumer, and he have great contribution, and he have many work like radio signal, transferring signals. So next is Thomas Edison. Thomas Edison having also having a great contribution, and he from the research from the research of his company, he gave many devices to consumer, and that is useful in daily life. Then he invented electric chair, the electric chair which work on AC current. That is having a great tussle with Nikola Tesla. Nikola Tesla work on AC current, but Thomas Edison work on DC current. And Thomas Edison don't want that AC current should provide to the consumer, and he invented this chair to showing the people that AC current is harmful for us. So basically, these two scientists hate each other, and you can watch a documentary on Thomas Edison and Nikola Tesla on Urdu YouTube channel. Uh, Dekho Suno Jano. And Alessandro Volta. Alessandro Volta was born on 1745 and died on 1857. He was also a physics chemist, and contribution in electricity power. With the invention, Volta proved that electricity could be generated chemically, and the prevalent theory and that electricity was generated solely by the living beings. So basically, these scientists having a great contribution, like we can also produce electrical effect from chemical. Benjamin Franklin born on 1706 and died on 1790. Like you can see, was one of the founding father of United States. Franklin discoveries resulted from his investigation of electricity. Franklin proposed that the vitreous and resinous electricity were not be different type of electric fluid, as electricity was called then, but the same electrical fluid under different pressure. He was the first to label them as positive and negative respectively, and he was first to discover the principle of conservation of charge. Like conservation of charge, like having a zero effect, positive, negative, and neutral charges are when their sum of their result is zero. Like, and next is Pascal. Pascal was born on 1623 and died on 16
62, and he have great contribution in measuring pressure and volume in cylinder fluids like this. And we have read the contribution of Pascal in 11th or 12th class. Michael Faraday. Michael Faraday was born on 1795 and 1867. He was an English scientist who contribution to electromagnetism and electrochemistry. His main discoveries include those of electromagnetic induction, diamagnetic, and electrolysis. It was by his research on the magnetic field around a conductor carrying a direct current that Faraday established the basis for the concept of electromagnetic field in physics. Like by the help of magnetic uh, contribution in electricity, he gave many contribution and gave many ideas. So, ma'am, complete all. वैसे आगे किस ये मीटिंग एंड हो रही है, इसको दोबारा से रीज्वाइन करें फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Ahmed, and my topic of presentation is nanoparticles. First of all, we discuss content. I discuss in my presentation introduction, types, advantages, disadvantages, and preparation of nanoparticle and evaluation. So next is nanoparticle. Nanoparticle is derived from the Greek word nano. Nano means extremely small. Next is nanoparticles are subionized colloidal structure composed of semi-synthetical मैम आवाज ही कोई नहीं आ रही। नेट डिस्कनेक्ट हो गया। इमाम आप स्टार्ट करते हैं मुझसे पहले। जी फिर आने लगे, वो डिस्कनेक्ट हो गया। अस्सलाम वालेकुम। My name is Muhammad Imam and topic of my presentation is electrical energy. The definition of electric energy is the energy which is caused by the movement of the electron from one place to another. Such type of energy is called electrical energy. We can say that the energy which is used in electric bulbs, the formula is E is equal to V I T, where V is voltage, I current, T time. Electric energy is the work done by the moving stream of electron of charge. The faster the movement of charges, the more the energy they carry. We can clear this concept by this example. Let imagine an electric energy is represented by a ball being shown through against the window. If you do not throw a ball very fast, it would not have enough energy to break the window. But if you throw a ball very fast, it will have more energy and will be able to break through the window. Electric energy is generated in the same way regardless of the starting for the energy.
The question is electric energy is generated in the same way? Yeah, electric energy is generated in the same way regardless of the starting form of energy. It is in nuclear power plants, hydropower plants, in windmills. In nuclear power plants, nuclear energy heat water into steam. The steam is used to turn a turbine blade which fires up a generator to give electric charge in their energy. In hydroelectric plant, falling water is used to spin the turbine blade. The blade turns the generator to create electric energy. In windmills, wind power wind power turns the turbine blade, which you have guessed it makes the generator to create electrical energy. Another example is during the thunderstorm, you can see lightning. Lightning is an example of electrical energy, and electric eels generated also generated electrical energy, which they use to defend against predators and to stun their prey. Thank you. पहले यहाँ से फिनिश हुआ था या स्टार्टिंग से फिनिश हो गया? करें वहीं से स्टार्ट बेशक जल्दी करें. यहीं से करूँ. Introduction, definitely, then nanoparticles are polymers. Size range 10,000 nanometer. The drug is dissolved, entrapped, encapsulated, attached to a nanoparticle matrix. The material which are used for the preparation of nanoparticles should be non-toxic, biodegradable, etc. Types. Nanosphere type are nanosphere and nanocapsules. Nanosphere are metric system in which the drug is specially and uniformly dispersed. Nanocapsules are system in which the drug is confined to a cavity, cell membrane. Advantages. Site-specific delivery of drugs. Nanoparticles help to achieve maximum therapeutic